Hi everyone, welcome back to my channel. So let's start a new video. In this video, I'm going to share about the financial independence for women, why it is important, and on the occasion of Independence Day, I'm sharing that because independence doesn't mean to only to be free. You have to free from lots of things. So let's get started. India as a country, we celebrated lots of year of independence, right? And we talk a lot about the independence for a long time now. But what do you truly understand by the term independence? As a basic human being, what you understand by the term independence by definition? In theory, it means being free and not controlled by any other person. Now, women merely purchase an item without the permission of another person. मीन्स हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ मीन्स जब से हम छोटे से बड़े हुए हैं तब से देख रहे हैं कि पहले हमें और कुछ करना है तो उसके लिए पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, ज़रूरी है क्योंकि हमारे लाइफ में अगर कंट्रोल किसी का नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो शायद हम गलत डायरेक्शन जा सकते हैं, दैट्स वाई। लेकिन एक एज के बाद जब आप प्रॉपरली मेच्योर हो चुके हो, आपको पता है क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद भी आपको किसी न किसी मेल पर्सन की लेनी पड़ती है एडवाइस कि मैं ये करूँ ना करूँ, मुझे जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको किसी भी फीमेल की भी ज़रूरत हो सकती है मे बी। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए ताकि अपने लाइफ के आप डिसीजन ले सको, जो भी आपके लाइफ के डिसीजन है वो आप लो। सो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक guys. Let alone take a life decision of or in your own terms, how many of you can? Most of the time the answer is a simple no. Why? That's the reason why we are talking about the financial independence. That's the reason why the term comes into picture. What you understand by that, what you understand by the financial independence is that having a job and earning for yourself, and not really. It's about being responsible for your own express and own expenses without the depending on anyone else, without your family, without your spouse or anyone else for that matter. It does not apply, it applies anyone, not just women alone, without regarding of your agenda or social economic situation. Anyone having a financial stability gives them a confidence, gives them a sense of security, respect. We all need that, right? But why are we talking a lot about this topic among the female population? Because for our whole life as women we are trained and taught to be ideal daughter, ideal wife and ideal mother, who are not supposed to have an opinion of their own, who are not supposed to have a voice of their own, and the sole reason behind that is because they can't, they have to depend on another person for their basic needs. And women around, I mean, for the most of the time, what I have seen is that they are taught to rely on the men in their life by pursuing for the basic needs, and by pursuing the woman to the seek permission for each and everything in their life. The men usually have the upper hand, or what do you call a grip in the relationship. And I have read somewhere that almost 27% of the women in the India are subjected to with domestic violence, and they don't talk about it, they keep mom about, and 1 out of 3 women are likely to be subjected to physical, emotional and sexual abuse. And yet they decide to stay in the situation, they decide to stay in that situation. Have you ever wondered why they do that? Why? So they stay in the situation because they are afraid, because of fear of the fact that where will I go, what will I do, who will take care of me. The change in the ideology is what the need think what our income can do in that situation, and the income will give the confidence to get out of the situation.
गाइस आपने हर जगह देखा होगा, बहुत जगह पे अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है एंड वुमेन्स बिना कुछ बोले उसे सहती रहती हैं। कुछ तो होती हैं जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टाइप की हैं, वो लड़ती हैं अपने जो भी जस्टिस उसके लिए लड़ती हैं, फाइट करती हैं। बट बहुत सारी वुमेन्स है ये सोच के चुप रह जाती हैं कि मेरी फैमिली ने तो यहाँ भेजा है, अब मैं वापस नहीं जा पाऊँगी, उनके घर में रहूँगी तो कितने दिन रहूँगी, ये सोच के वो चुप रह जाती है। एंड मेरे घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मैंने अब तक शेयर नहीं किया है आप लोगों से, जस्ट बिकॉज यू आर माई फैमिली एंड यू हैव टू नो दिस। एंड मेरी खुद की एक बड़ी सिस्टर है, मीन्स मेरी मौसी की बड़ी बेटी है, एंड सी इज़ नो मोर। उनके मैरिज के 5 ईयर्स हो चुके थे एंड उनके एक 4 ईयर्स की गर्ल है एंड 1 साल का बेबी भी है। एंड वाई सी अटेम्प्टेड द सुसाइड, सो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं मुझे एटलीस्ट नहीं पता है, बट एज आई नो देयर वॉज समथिंग इन देयर इन लॉज फैमिली जो वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाई एंड उससे आप वो और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती थी। एंड शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि ऐसी लाइफ जीने से बेटर है कि मैं ना रहूं, क्योंकि वो फैमिली के साथ भी अपने घर भी नहीं जा सकती थी एंड वहाँ से पर भी सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल था। एंड वो सोचती थी शायद कि अब मैं क्या करूँगी, किस पे मतलब कौन मेरा केयर करेगा, मैं क्या कहाँ जाऊँगी, ये सारी चीज़ें शायद हो सकती है मे बी। सो इसलिए ज़रूरी है आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कि आपको ऐसे डिसीजन ना लेने पड़े, आप डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकल सको, आप सेक्सुअल अब्यूज़ से बाहर निकल सको एंड आप अपने लिए स्टैंड लो। दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। हमारे सोसाइटी में है कि शादी करा दो, अगर बच्चे जो है 19-20 के हो जाते हैं तो उनकी शादी करा दो, उनका टेंशन ख़त्म। हमारी फैमिली ये सोचती है कि हम खुश रहेंगे, बट लाइफ में जो शॉर्टकट हम लेते हैं शादी का वो हमें खुशी कभी नहीं देता है। उसके कारण से हम और 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। एंड कोई अगर मेरी बात करता है, गाइज मैं वो गर्ल हूँ जो मीन्स अपना बेड ठीक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, अपने स्नान करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, अपने रूम को क्लीन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, तो मैं पूरी फैमिली चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लूँगी। एंड मुझसे लोग उम्मीद कैसे रखते हैं कि मैं एक फैमिली को संभाल पाऊँगी। सो आई एम नॉट गेट रेडी फॉर दिस, सो आई कांट मैरिज। सो गाइस ऐसे ही अपने जो टॉपिक्स थे उसे वापस आते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैं थोड़ा फ्लो में ज़्यादा आ गई। So to get out and have a voice of the terror and say, I think I can be the provider for myself. I can be the provider for myself and my family. And that change is where the change happens and comes to a new trend in the marriage market. With a woman, education is merely a market value for the marriage market. And the first thing, and I know from my experience and many out here, the first thing after the marriage they are asked to do is leave your job. Why? Because they are very well know that having a job and income means they will have an opinion, and that female can influence the next generation, this their children, and that obviously will shatter the age old system of the uh, patriarchy and the gender bias. So many people gender bias which so many people here are trying to protect it. I still remember this. एंड गाइज ऐसा बहुत बार हो चुका है। वाई डू वी नीड टू talk about the financial independence? We have job or not, but we all have a skill, right? We have a skill, we can learn a skill which we can convert and monetize it to in an income. One thing, if you have seen in your notice during a lockdown, they have learned the basic skills to earn income from the baking. They learn how to survive. We have skills in ourselves, we just don't have the confidence for that. Now we have an aim, then income, then what an income should never be about expenses. We earn to cover our expenses, then you are saving, and that is your support system. Confidence is your saving, and again, if you want to grow beyond that, invest. Always invest if you are able, aiming for something, because without investing your savings is a debt money. So always think very smart about how you can grow on your own without an external assistance. There are so many. So now for all the women's out here, it's your self confidence path for giving your own on identification. We all night in the day, how do you get an identity right?
then towards a life. It can build a life that you truly decide what you truly desire, not for someone else. Their dream is something that keep your life, and financial independence gives us hope to that dream, hope to dream, and wings to the fly, and what and have the courage to chase their dream. There is nothing wrong about dreaming, but you yet fight for it. You have to work for it, because at the end you have to understand it's just you who are responsible for your life. You are the savior for your life, so you have to find a way to sustain yourself. There, having a financial independence is the first step towards your self realization, towards your dream. And without dreaming for nothing, okay, from a strong woman comes a stronger generation. So let us the reason for the stronger generation and strong being to take decision of yourself, being be financial independent. Money is the reason for the decision, एंड फाइनेंशियली फ्री होकर पूरी ज़िंदगी पैसा आते रहेगा, यू नो डैट। गाइस, फाइनेंशियली फ्री होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे पेरेंट्स को दर्द ना सहना पड़े, क्योंकि हमारी फैमिली जो होती है, हमारे भाई जो होते हैं, हमारे पापा जो होते हैं, वो बचपन से हमारे लिए मनी अर्न करते ताकि हमें खुश रख सकें, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एंड जब वो हमारी शादी कर देते हैं तो फिर उन्हें कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद अपनी बेटी की डेड बॉडी देखनी पड़ती है। वैसा सिचुएशन नहीं आए, इसलिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। एंड इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड सच में बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए, बट गट्स नहीं आ रहे थे अंदर से, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बोल पाऊँगी इस चीज़ को, लेकिन फाइनली आज मैंने ट्राई किया एंड आई डिड इट। सो गाइज, प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस तक आप वो पहुँचाओ ताकि वो खुद के लिए काम करें, एंड वो ये ना सोचे कि शादी कर लेंगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी। लाइफ ईजी नहीं होती है। लाइफ जो है बिल्कुल मीन्स एक ट्रैप हो जाता है आपके लिए। आपको 24/7 एक वैसे प्लेस के लिए काम करना पड़ता है जिसके लिए आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एंड स्टार्टिंग में तो कभी अच्छा लगता है वो चीज़ें, लेकिन फिर बाद में वो आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड उस टाइम आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, एंड उसके बाद फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।